बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बैंक अल हबीब GTO ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफिसर प्रोग्राम 20 अक्टूबर 2024 को जो टेस्ट हुआ है वो मैं आज सॉल्व करूंगी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर कोई भी मिस्टेक हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर बताएं और उसको करेक्ट करें कि मैं उस कमेंट को पिन कर सकूं। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस आए वो आप तक पहुंच सके। कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। बैंक अल हबीब GTO टेस्ट 2024 जिसमें हमारे पास पहला सेक्शन है वो जनरल नॉलेज सेक्शन है। जनरल नॉलेज सेक्शन में हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 25 हैं। तो जनरल नॉलेज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द हाईएस्ट पॉइंट इन द क्रोकरम माउंटेन रेंज is the peak of K2. It is located along the border of तो करेक्ट है बी, चाइना एंड पाकिस्तान। सेकेंड क्वेश्चन है विच कंट्री हैज 6 months of days and 6 months of night? करेक्ट ऑप्शन है सी, नॉर्वे। मोइंजोदड़ो is Sindhi language word that means Mount of Death. The driest and the windiest continent in the world is Antarctica. Option A. Which part of the eye play a vital role in vision? Correct option is B, retina. All of the following organs in human body are located both on the right and left side except spleen. C. The sun is a dash star. Mirpur Khas is famous for option A, mangoes. Pakistan's largest river is option A, River Ravi. The highest species in the feline family is the dash. Correct option is C, tiger. The largest source of electricity generation in Pakistan is thermal. D. Who act as the acting president in the absence of president of a Pakistan? Correct option is C, chairman Senate. According to the population, Pakistan is the dash largest country in the world. Fifth, which of the following country is not bordered with Pakistan? इसका आंसर आप लोग कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे। हाईएस्ट रेनफॉल एरिया इन पाकिस्तान इज मरी। Who nominated the Chief Justice of Pakistan? President. The first nuclear power plant in Pakistan was established in Karachi. Which river is the longest river in the world? Nile. The richest scale is used to measure earthquake. Which sport is known as the king of sport? Soccer, football. Which planet is closer to the sun? Mercury. A couple living in country of Asia is moving to a new country in Africa. They have packed their furniture and other household items and they want to take it with them to the new country. The best mode of transportation for them would be options दिए हुए हैं roadways because they are always easily accessible, waterways because heavy items can easily be moved between continents, railway because they can carry people as well as the heavy items, airways because item would be with them and will not get lost. आपके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है वो भी कमेंट में बताएं। मैंने तो बी करेक्ट किया हुआ था, waterways because heavy item can easily be moved between continents। यहाँ पे अपना भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे और क्यों। The region in Pakistan is surrounded by the natural beauty with waterfall and lakes, yet it has not been developed and people are economically deprived. To ensure progress in that region of Pakistan, it is essential to develop tourism in the region. ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं आप में के अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है। The rural areas of Sindh face economic disparity due to the rigid feudal system
being prevalent in the region. The major step that can help to counter the given problem is to option A, establish industry. Option B, develop vocational training center. Option C, introduce mechanized farming. Option D, reform the educational sector. Reform the educational sector. Shamshad is planning to set up a cottage industry of a handicraft where she has hired 3 people. 2 of them will be involved in the production and the third one is distribution of the products. To set up these industries, Shamshad would require local raw material. जनरल नॉलेज का सेकंड पोर्शन है हमारे पास बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। तो बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द बेस्ट मेजर टू सी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी इज बाय इट्स डैश। करेक्ट ऑप्शन इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन बी, if the currency of our country gains strength, which from the following statement would not be true? Option D, foreign investment in the country would be more attractive. Goods produced to make other goods are called capital. Fiscal policy consists of government's dash expenditure and taxation. Option A, the goal of economic science is to dash improve the overall living standard of people. Option B, which group is most likely to suffer during high inflation? Option C, fixed wages earner. Replacement of an existing loan with another loan is known as. Option D, refinancing. An increase in supply generally dash and dash quantity demand. Lower end prices. A business or a company should accept investment that offer rate of return and their opportunity cost of capital. Option B, greater than. Poverty line is determined by dash the income level need to meet their basic needs. Option C, which of the following is a key difference between a commercial bank and investment bank? Commercial bank accept deposits while investment banks specialize in organizing capital for companies. For how many months is a check valid from the date of issue? 3 months. Which function is performed both commercial bank and central bank? Dealing in foreign exchange. A bank issued a document that authorized the bearer to receive money from one of its foreign branches or other bank abroad. Which is such a document called or letter of credit? Option C, letter of credit. Which of the following is known as an evidence that transaction took place? Source documents. ये था हमारा बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। अगर इसमें कोई मिस्टेक है, कोई गलत ऑप्शन सॉल्व किया है तो वो भी कमेंट में बताएं ताकि उसको मैं करेक्ट कर सकूं। थर्ड पोर्शन है हमारा मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स में तमाम क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करूंगी और साथ में जो है वो मैं इसके साथ ही मैं इसका सोल्यूशन जो है वो शेयर करूंगी। तमाम क्वेश्चन कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं मैंने, और साथ में इसका मैं राइट साइड पे सोल्यूशन भी पेस्ट कर दूंगी कि कैसे इसको सॉल्व किया है, तो साथ में ज़रूर देखें। अगर फिर भी कोई लगे कि गलत सॉल्व हुआ है या इस तरह नहीं सॉल्व करना था तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम नेक्स्ट इन सीक्वेंस 1, 3, 11, 43। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए 171। साथ में स्क्रीनशॉट भी है कैसे 171 आया है, राइट साइड पे स्क्रीनशॉट है, चेक करें। अगर नहीं सही तो वो भी बताएं। सेकंड क्वेश्चन है दानिश drove his car at a speed of 120 km/h for the first 2 hours and then at a speed of 100 km/h
For the next half an hour, find the distance covered by him during the entire journey. Option C 290 किलोमीटर। कैसे 290 है, साथ में बताया हुआ है क्यों, कैसे, किस तरह, ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट है the population of a city increased in 2 years from 25,000 to 30,000. Find the percentage increasing during this year. 20%। वीडियो पॉज करें, मैथ के सेक्शन में और देखिए कैसे सॉल्व हुआ है। A man bought a flat for Rs. He borrowed 55% of this money from a bank. How much money did he borrow from the bank? Option C is correct. Sadiq purchased a plot of Rs 8,000. He sold the plot to Abid as a profit of 20%. Abid in turn sold that plot to Arif at a loss of 20%. How much does the plot cost to Arif? Option D is correct. A non-profit organization is selling shirts to raise money. They purchased 500 shirts at a cost of Rs 5 per shirt. During this month, they are only able to sell 388 shirts. They donate extra shirts. If the shirts sell for Rs 13 each, how much does the organization earn or loss during campaign? करेक्ट इज ए 2544 यानी कि 2544। The ratio of salaries of two employees is 8:11. If the salaries of both combined is, find the salary of first employee. और सोल्यूशन के हिसाब से तो करीब करीब जो बनता है वो बी है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, तो ये दफ़ा इसको चेक कर लें, लेकिन करीब करीब यही बनता है तो मैंने यही लगाया है सोल्यूशन के अकॉर्डिंग। अ कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट in two projects A and B. Project A yield 10% return while project B 12% return. If the company invests 3 lakhs in project A, how much will it take to total return? Option A is correct. A bakery sells 240 cupcakes a day. If 30% of the cupcakes are chocolate and 40% are vanilla and the rest of strawberry, how many cupcakes are strawberry flavored? 72 cupcakes. The last 3 digits of the multiplication of this will be 745. A water tank can hold 1200 gallons of water. If 30 gallons of water are already in the tank and 30 gallons of water is added per hour, how many hours will it take to fill the tank? 30 hours. Option B. From January through June, 46,200 immigrants applied for citizenship. During this same period last year, 12,000 immigrants applied. What is the percentage of a decrease? 61.5. C. Two trains started at the same time, one from A and B and other from B to A respectively in 4 horns and 9 horns. After they passed each other, the ratio of the speed of the two trains were. Correct option is D 3:2। अच्छा, यहाँ पे जो बन रहा है वो 9:4 बन रहा है, लेकिन इसको जब डिवाइड के हिसाब से किया जाए तो 3:2 ही बनता है। A man sold 2 chains at 1200 each. On one B gained 20% and other B lost 20%. His gain or his loss in the whole transaction is. Option B 4% gain.
The average temperature for Wednesday, Thursday and Friday was 40 degree. The average temperature for the Thursday, Friday and Saturday was 41 degree. If the temperature on Saturday was 42 degree, what was the temperature on Wednesday? Correct option is 39 degree. An equivalent triangle has two of its sides equal. अब इस क्वेश्चन में तो इक्विवेलेंट ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब इसमें कंफ्यूज करके दिया हुआ है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन फॉर या नन ऑफ दी अबव। होती तो तीनों साइड इक्वल ही हैं। अब इसमें टू कहीं कहीं है, अब दोनों भी इक्वल होती हैं, तीसरी भी इक्वल होती है। अब इसमें नन ऑफ द अबव आएगा या ट्रू आएगा। आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या आएगा। In an election between two candidates are received 55% of the total valid votes while 20% of the total vote were invalid. If the total number of votes was 7,500, how many valid votes did other candidate receive? 2,700. The average of 18 observation was calculated and it was 124. The latter, it was discovered that two observation 46 and 82 were incorrect. The correct values were 64 and 82. Find the average of 18 observation. Option C 122. The mean of a 50 observation was 36. After a week, it was found that the observation 48 was wrongly taken at 23. Find correct mean. 36.5. A great gardener increased the area of his rectangular garden length by 40% and decreased it by 20%. Find the percentage increase the area of his new garden. 12%. Option A. A man pays 10% of his income as an income tax. If the tax has the tax amount of 1,500, what is the income? Option B 15,000. A carton contains 10 boxes. Each boxes contain 1 dozen cubes. How many cartons are needed to fill 960 cubes? 8. In a movie theater, 480 out of 500 seats were occupied. What percentage of the seats were not occupied? D 4%. A bag contains an equal number of rupees 5, 2 and 1 coins. If the total amount in the bag is 1152, find the number of coins of each kind. 144. Option C. If Arif can read 39 pages of a book in half an hour, how long will it take him to finish a book that is 128 pages? 16.5 on. तो ये था जी हमारा मैथ का पोर्शन। अगर इसमें कोई मिस्टेक है, सही नहीं सॉल्व हुआ तो कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट पोर्शन, लास्ट पोर्शन एमसीक्यूज का, वो हमारे पास इंग्लिश का है। तो इसका स्टार्ट करते हैं। ही इज़ अफ्रेड डैश लिजिट ऑफ natural gas is often dash than electricity for home use. Cheaper. Arif is standing dash Samad and Adnan between. All the winners dash prizes tomorrow will be given. The examination board dash not dash this question in the previous exam paper. Did and ask
Look at all those black clouds. It dash today. It's going to rain today. An announcement dash to cancel all flights due to heavy hail fall due to storm dash. Ismate, please do not laugh dash those beggar at those beggar. इसमें एक 74 वाला MCQs मिसिंग था, 73 के बाद 75 दे दिया उन्होंने। We have been living in Sector 80 Korangi dash 1997 since. Our armed forces are dash those of any other country in the world. Superior to. Do not cry dash spilled milk. Over. Dash been to London. Have you ever been to London? तो ये था इंग्लिश का पोर्शन MCQs का लास्ट। इसके बाद एक पैसेज दिया हुआ था, पैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है और ये पैसेज था पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर और इससे आपने रीड करना था और इसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करने थे। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे तो ये थे वो क्वेश्चंस और इसके अकॉर्डिंग ये तमाम 85 तक क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अगर इस तो ये GTO का पेपर था और जो ऐसे दिया हुआ था उसमें से एक तो याद है, दूसरा अब याद नहीं है मुझे। वो ऐसे था, इसमें वो था एक्सपीरियंस दैट चेंज योर लाइफ फॉरएवर और दूसरा जो ऐसे था वो हाउ पाकिस्तान कैन गो थ्रू टू द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। सेकंड वाला श्योर नहीं है ये था या कोई और था। अगर किसी ने पेपर दिया है तो ज़रूर कमेंट करें कैसे कौन से थे, यही दोनों थे या इसमें मैंने कोई मिस्टेक की है। तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है या इसमें कोई मिस्टेक है या सॉल्व करने में कोई भी सेक्शन में मैंने मिस्टेक कर दी है तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उस कमेंट को पिन कर सकूं, क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ पूरी कोशिश करती हूं कि इसको जो है वो अच्छे से अच्छा सॉल्व करूं और आप लोगों को दिखाऊं, शेयर करूं ताकि आपकी एक गाइड हो सके, आपको हेल्प हो सके कि किस तरह पेपर पैटर्न आता है। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जॉब के लिए मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर ले और मज़ीद इस तरह के सॉल्व टेस्ट इंटरव्यू तमाम मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, ज़रूर जाएं, जाके देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें।